Hello students, after completion the 4 exercises of chapter number 11 double consonant PR series, इसी continuation में आज हम करेंगे PR series with S circle. When an initial circle or loop is written on the same side as the hook of the PR series, the R is included. मीनिंग कि जो स्टार्टिंग में इनिशियल सर्कल या लूप उसी सेम साइड से बनेगा जिस सेम साइड से पीआर सीरीज के हुक लिखे जाते हैं, तो उसमें आर इंक्लूडेड समझा जाएगा. जैसे अभी हमने पहले एस सर्कल पढ़ा था, तो वो हमने लेफ्ट मोशन से लिखना सीखा था. वही सेम सर्कल अगर हम राइट मोशन से, इट मीन्स पीआर सीरीज की साइड से, जिस साइड से हम आर हुक लिखते हैं बेसिकली, उसी साइड में अगर हम एस सर्कल लिखेंगे तो उसमें आर इंक्लूडेड समझा जाएगा. दिस इज द रूल. एज इन स्प्रिंग, SPR थ्रू द लाइन. अब इसमें क्या पढ़ा गया? SPR, नॉट SP. ओके, क्योंकि ये राइट मोशन से लिखा गया है, तो दिस इज द रूल जो हमें लर्न करना है. SPR थ्रू द लाइन विद NG स्ट्रोक, लाइट डॉट ऑन द थर्ड प्लेस ऑफ NG बिफोर इट फॉर स्प्रिंग. Strange, STR on the line and stroke, J stroke, heavy dot on the second place of STR after it. Strong, STR above the line and G stroke, light dash on the first place of STR after it. Street, STR halved for another T and heavy dot on the third place of STR after it. STR, straight, same outline hai, STR is halved for another T and heavy dot on the second place of STR after it. Strength, STR on the line, N and ith, and light dot on the second place of STR after it. Super, supper, SPR on the line and light dash on the second place of SPR before it. Separate, SPR on the line with T and light dot on the second place of SPR before and after it. Secretary, sucker, SKR, ठीक है, halved for T, secretary. ओके, टी के लिए हाफ हुआ कितना? SKR, ठीक है. और upward R is used here on the line, whole outline on the line. तो क्या? लाइट डॉट ऑन द सेकेंड प्लेस ऑफ सकर बिफोर एंड आफ्टर इट, एंड लाइट डॉट ऑन द थर्ड प्लेस ऑफ अपवर्ड आर ऑन द थर्ड प्लेस ऑफ अपवर्ड आर आफ्टर इट. स्वीटर, SW विद SW तो हम लिखते ही हैं स्व और TR, ठीक है. स्वीटर, SWTR थ्रू द लाइन, स्वीटर, and heavy dot on the third place of TR, SWTR before it. Sticker, sticker, ठीक है. STKR on the line and light dot on the third place of STKR before it. Clear है? Next rule is both hook and circle are shown in the middle of a word. अभी जो हमने ए पार्ट पढ़ा वो इनिशियल सर्कल और लूप के बारे में था. अब ये बीच में इन द मिडल ऑफ ए वर्ड आएगा, तो कैसे बनाना है? एज इन एक्स्ट्रा, के एस सर्कल एंड TR, जैसे हम TR का हुक बनाते हैं, R का हुक बनाते हैं किसी भी स्ट्रोक के साथ. ऑन द लाइन, light dot on the second place of K before it and light dot on the first place of TR after it. Extremely, K S circle, TR M upward L, light dot on the second place of K before it, heavy dot on the third place of M before it, extremely, and light dot on the third place of upward L after it. Industry, N stroke, D stroke through the line, S circle, TR, and light dot on the third place of N before it, light dash on the second place of D after it, light dot on the third place of STR या TR after it. Next is district, D through the line, S circle, TR, K halved for another T, light dot on the third place of D after it, light dot on the
third place of K before it, halved K before it. Okay, clear है. Next is express. K, S circle, PR and S circle finishes on the line. Light dot on the second place of K before it and light dot on the second place of PR after it. Next rule is when SKR or SGR follows T or D, the combinations are written thus. अब SKR और SGR की जो कॉम्बिनेशन आएगा, अगर ये वाला साउंड आएगा तो हम कैसे लिखेंगे, तो भी हम उसी ही मोशन से लिखेंगे जिस मोशन से हम आर हुक लिखते हैं. एज इन डिस्क्राइब D ऑन द लाइन SKR एंड B थ्रू द लाइन से कट करेगा एंड आई डिफ्थोंग ऑन द फर्स्ट प्लेस ऑफ SKR आफ्टर इट. नेक्स्ट इज डिस्ग्रेस D through the line SKR with S circle and light dot on the third place of D after it and light a heavy dot on the second place of SGR after it. Next is disagree D through the line SGR, light dot on the third place of D after it and heavy dot on the third place of SGR after it. क्लियर है. डिस्टिंक्टिव आउटलाइंस मतलब जिनका साउंड एक जैसा है, हम उनसे लिख भी सकते हैं लेकिन हम उनको एक दूसरे से अलग करने के लिए आउटलाइन लिखते हैं जो कि हमें याद रखनी पड़ती है. ठीक है. प्रॉपर्टी. ठीक है. प्रॉपर्टी में per on the line, another per and T is used here. Light dash on the second place of first per after it, on the second place of first per after it and I diphthong. Triphone is used here on the first place of second per after it and light dot on the third place of T after it. Next is distinctive outline of property is property. ठीक है. तो हम ये कैसे बनाएंगे, पर another P, upward R and T. ठीक है. पहला पर जो है वो above the line से बनेगा, दूसरा P through the line को कट करेगा, फिर upward R बनेगा and T is used here. Light dash on the first place of per after it, light dot on the second place of P after it and light dot on the third place of T after it is used here. Propose, per on the line and another P is used here with S circle, through the line से cut होगा. A light dash on the second place of per after it, heavy dash on the second place of P after it. Purpose, इसका distinctive outline क्या है, purpose. ओके, इसको हमें remember रखना है. P on the line, upward R, another P on the line with S circle. Light dash on the second place of first P after it and light dash on the second place of another second P after it. These are the short forms for this chapter. Description. SKR is used here on the line for description. Supper. SPR with another S circle above the line is used here for surprise. सरप्राइज. ठीक है. ये शॉर्ट फॉर्म है और इसी के यही आउटलाइन में हम SPR विद ST लूप यूज करेंगे अबव द लाइन, तो वो किसके लिए पढ़ा जाएगा, सरप्राइज के लिए. ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी. इसकी डिक्टेशन, आप लोगों को कोई भी परेशानी हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. शेयर, ड्रॉप अ लाइक, कमेंट.